Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. In this video, we are going to discuss another important lecture under ARD Simplified Series and the topic is farming system. ठीक है, farming system को समझेंगे आज and we will be understanding different types of farming systems that are important for your exam point of view. First of all, let us see previous year questions from this topic. Okay, if you know the question, if you know the answer, you can just solve it right now. Otherwise, don't worry, I'll be discussing all the concepts and at the end we'll be solving these questions together, right? So the first question that was asked to you in your examination was an interdependent, interrelated, often interlocking production system based on few crops, animals and related subsidiary enterprises in such a way that maximize the utilization of resource of each system and minimize the negative effect of these enterprise on the environment is known as. Okay, this was the first question. Next question, in which of the following techniques plants are grown using a water-based nutrient solution rather than soil and can include an aggregate substrate or growing media such as vermiculite, coconut coir and perlite. Okay. Another question, what is slash and burn agriculture? Now all these questions are from the topic farming system. So let's understand first what is farming system and different types of farming system. So students, when I talk about farming system, what is it? It is basically an appropriate mix of farm enterprises, the means available to the farmer to raise them for profitability. So basically, farming system is the mixing of all farm enterprises. Okay, if a farmer have a farm, right, in that farm, farmer is doing different activities like crop production, activities like livestock rearing, activities like piggery, fisheries, poultry and so and so. Okay, there can be different enterprises on a farm. Now how this the farmer is integrating all these enterprises in such a way that the farmer can raise the profitability. So this is known as farming system. Farming system kya hai? Basically, it is the mixing of all enterprises, all the enterprises that is there in the farm with the of a farmer and in order to raise profitability. ठीक है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सारे enterprises का mix करना, that is called as farming system. ठीक है, I hope it is clear. It is appropriate mix of farm enterprises and the means available to the farmers. Okay? Now let us understand this through an example. So students, what can be the different farm enterprises a farmer can have in his farm? So like for say, farmer has one enterprise of crop production, okay? And another enterprises of livestock rearing. Okay? These farmer has these two enterprises. This is an example to understand what is farming system. Okay? This is enterprise 1, this is enterprise 2. Now फार्मिंग सिस्टम क्या है? इन दोनों को अप्रोप्रिएटली यूज करना so that farmer can raise the profitability. How can it be done? So like for say in crop production, what will happen? The farmer will grow crops, right? Now after growing crops, okay, after harvesting crops, the leftover of crop can be used for livestock feeding, right? So the crop straw, the dust or the waste product of crop, whichever is left, can be used for feeding livestock, right? And students, what will happen? The livestock will generate compost here, okay? Compost or the waste material of livestock, we can say, which is the organic manure that can be used for crop production, right? So now what is this? This is a system which has been created. Okay? The resource of one enterprise is being utilized in other enterprise, right? And why we are doing so? So that we can increase the profitability. See, if we do not have this livestock rearing here, what the farmer would have to do? The farmer would have to purchase that organic manure from some other source. That will increase the cost of production of crop production enterprise, right? So basically the aim of farming system is to utilize the resource of all the different farm enterprises in such a way that profitability can be increased. Okay? So this is your farming system. Now students, let us discuss different types of farming system. So we have traditional farming system, we have semi-commercial farming system, and we have commercial farming system. So what do we understand by these? So traditional farming system is basically the farming system where we are using all the traditional
मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। सो जो पुराने जमाने से फार्मिंग सिस्टम होती आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे द ओल्ड टेक्निक्स, द ओल्ड नॉलेज ऑफ डूइंग फार्मिंग इज अप्लाइड, राइट। सो दिस इज ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल है सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम, subsistence farming system and shifting cultivation. Okay, subsistence farming system and shifting cultivation are the type of traditional farming system. अब subsistence farming system क्या होता है, I'll discuss this in coming slide, but let's understand here what is shifting cultivation. So traditional का मतलब I hope you have understood. Traditional मतलब where we are using traditional technology, where we are using old technology for doing farming, right? Like for example, earlier wooden plows were used to plow the land, right? ट्रैक्टर्स नहीं होते थे तो वुडन प्लोज वर यूज टू टिल द लैंड, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक है। सो जो आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यहाँ पे आपके जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वो यूज होती थी। सो बेसिकली दैट इज ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। अब इसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज बेसिकली स्टूडेंट्स हेयर एक डिफरेंट टाइप की ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम जो चली आ रही है, अब नहीं होती है बट हाँ पहले होती थी। इसमें क्या होता था कि फार्मर्स दे एक्वायर अ लैंड, दे कट ऑल द वेजिटेशन दैट इज देयर प्रेजेंट ओवर दैट पीस ऑफ लैंड एंड दे ट्राई टू कल्टिवेट दैट लैंड, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फॉर at least 5 to 7 years they will grow a particular crop on that piece of land. 5-6 साल अगर आप एक ही क्रॉप को एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में ग्रो करोगे, व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विल डिक्रीज, राइट। नाउ what they will do, they will shift to another land. Okay, once the productivity of this land is decreased, they will shift to another land and they will leave this land for restoration purpose, right? So after 6 to 7 years they will return back to again this land. So this is why this is called shifting cultivation. They are shifting from one piece of land to another piece of land, ठीक है। So shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture, ठीक है, slash and burn agriculture, because I have told you here what farmers are doing. Farmers are cutting down, burning down all the vegetation that is present over that piece of land, okay, and then cultivating it. It is also known as zoom cultivation, okay, zoom cultivation. This is the name of this type of cultivation. When it is done, it is known as zoom cultivation, means popularly it is famous as a zoom cultivation, ठीक है। So these are the different names of your shifting cultivation. Clear? I hope shifting cultivation is clear. And again, this is a traditional type of farming system that used to be there, right? Now students, next subsistence, I am going to talk about subsistence in coming slide. Next we have is semi-commercial system and commercial system. So what is commercial and semi-commercial? Basically in commercial system, all the new advanced techniques and technologies are used to do farming, ठीक है। जो अभी कमर्शियली हम यूज कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में जो किया जाता है, राइट, जहाँ पे हम सारे नए एडवांस टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, इज कमर्शियल सिस्टम। एंड इन बिटवीन योर ट्रेडिशनल एंड कमर्शियल सिस्टम वी हैव सेमी कमर्शियल सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल और कमर्शियल के बीच में आता है सेमी कमर्शियल सिस्टम, वेयर वी आर यूजिंग सम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज एज वेल एज सम एडवांस टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डू फार्मिंग सिस्टम, दैट इज नोन एज सेमी कमर्शियल सिस्टम। Clear? Now I hope from this particular slide it is clear what is farming system. Farming system क्या है? It is the appropriate mix of different enterprises in order to increase profitability. Now farming systems are of different types: traditional, commercial, semi-commercial. Traditional क्या है? Where we are using old techniques and technologies for doing the farming. Clear? Then commercial में, in commercial we are not using old techniques, rather we are using all kind of modern and advanced techniques to do farming, that is commercial system. And in between your traditional and commercial comes semi-commercial farming system, right, where we are using some of the traditional techniques and some of the advanced techniques to do farming system. That will be your semi-commercial farming system. I hope it is clear. Now in traditional we discussed about subsistence and shifting cultivation. Subsistence cultivation is what? Now let us discuss about it. Subsistence cultivation is basically, student, a type of cultivation where the farming is done to just sustain the family, where farmer do not have enough land
and they are growing crop just to sustain their family, just to fulfill the requirement of family. That is known as subsistence agriculture or subsistence farming system, right? Again, this is a form of traditional farming system. Why? Because in traditional, again, in subsistence agriculture, what happens? Farmer has limited land. Farmer cannot use more advanced techniques. Farmer cannot use more implements, or we can say farmers do not have enough money to invest on the land, right? So they will use traditional and old method of doing farming, and they will grow the crop just to meet the family requirement. That is the subsistence farming system. Clear? Again, a form of traditional farming system, right? So I hope now all these things are clear to you. Now students, let us discuss the types of farming systems that are followed in India, or that are seen in India. Okay? So first we have a subsistence farming system. I have told you what is subsistence farming system, where farmer is growing crop just to maintain the livelihood of his family, or just for the survival of his family, right? So this is subsistence farming system, and this is one of the farming system that is found in India. ठीक है? तो mostly India में, as farmers have limited land, so they are doing subsistence farming system. Again, this is a traditional method. So अभी भी traditional and orthodox techniques and technologies are being used here. इसीलिए productivity भी कम होती है subsistence farming system की. ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम में, और इसीलिए फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो कर पाते हैं, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम दैट इज फॉलोड इन इंडिया. नेक्स्ट, इन इंडिया वी हैव कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम. नाउ अब जब जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बड़ी लैंड होती है, ज़्यादा एरिया होता है, राइट, तो देयर कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम इज फॉलोड. व्हाट इज कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम स्टूडेंट्स? बेसिकली in this type of farming system, all kind of conventional method or all kinds of things are used. Like there will be use of pesticides, there will be use of insecticide, there will be use of herbicide, there will be use of modern techniques, there will be use of implements, will be very new and recent implement will be used, right? So that is conventional farming system. But students, the conventional farming, the drawback of this conventional farming system is that we do not take into consideration that in the conventional farming system the farmer do not take into the consideration of environment health. ठीक है? environment health को consider नहीं किया जाता है. So if all the chemicals, everything is being used freely in on any land, that is your conventional farming system. ठीक है? यहाँ पे the only and only aim is to maximize the profit. Here in conventional farming, the only aim of farmer is to maximize the profit. ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक पॉइंट रहता है कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम का. उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जो रेसिडुअल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है सॉइल में, एनवायरमेंट को हैम्पर कर सकता है. That is not considered here. The only main objective of conventional farming is to maximize the profitability. ठीक है? So this is your unconventional farming system, which is again one of the type of farming system followed in India. Now students, in order to prevent environmental hazards जो agriculture से होते हैं, there are alternate farming system. There is a alternate farming system also, ठीक है, in which farmer do not use chemicals, they do not use any kind of things that can harm environment, that can harm soil. Okay, so that type of farming system is known as alternate farming system, and one such alternate farming system example is organic farming. ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ दिस इज समथिंग विच जो नया नहीं होगा आप सभी के लिए. ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब जानते होंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? यहाँ पे वी आर ग्रोइंग क्रॉप ऑर्गेनिकली. ठीक है? सो वी आर ओनली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हमें पेस्टिसाइड यूज करना है, वी विल बी यूजिंग बायो पेस्टिसाइड्स, और वी विल बी यूजिंग अगर हमें फर्टिलाइजर यूज करना है तो वी विल बी यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट? वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ केमिकल्स हियर. ठीक है? किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल्स विच इंक्लूड योर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इज नॉट यूज हियर. रादर वी विल यूज ओनली द living form of that. Either bio pesticide is used, either bio fertilizers are used, ठीक है, organic manures are used here. So that
इज ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। अब पर्पस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का? देखो स्टूडेंट्स, व्हेन कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड, ऑब्वियसली कुछ टाइम पीरियड में हमें उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड होगी, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो दैट्स वाई नाउ मोर एंड मोर फार्मर्स आर more and more farmers are educated regarding this organic farming system। और आपने देखा होगा जो फूड और जो प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच इज सेल अंडर ऑर्गेनिक लेबल, दैट इज कॉस्टली ऑल्सो, राइट? क्योंकि बहुत अभी कम लैंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इस फार्मिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है? और हमें जो भी क्रॉप ग्रो करनी है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो करना है, दैट वी हैव टू ग्रो ऑर्गेनिकली, ठीक है? सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम विच इज फॉलोड इन इंडिया, विच इज alternate farming system। and you know there are different types of alternate farming system जहाँ पे आपके कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम वाली टेक्निक्स यूज नहीं होती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Now we have another type of few other types of farming system in India. First we have is specialized farming system. Now students, आपने देखा होगा in some farms only sugarcane is grown, in some farms only tobacco is grown, in some farms only cotton is grown. So basically this is why, क्योंकि जो farmer है they are specialized in that type of farming, ठीक है? इन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम यूजुअली 1 or 2 एंटरप्राइजेज आर टेकन, ठीक है? 1 या 2 क्रॉप ग्रो की जाती है, बट मोर देन 50% ऑफ इनकम फ्रॉम दैट फार्म इज कमिंग फ्रॉम 1 क्रॉप। लाइक फॉर से देर आर 2 क्रॉप्स like sugarcane and potato, right? So if any farmer will have a particular amount of land, so he is going sugarcane and potato both, but if the sugarcane, if more than 50% of the income is coming from the sugarcane, then that is the main source of income for that farm. Potato is just another source, right? So this is called specialized farming system, where you know more than 50% of income is coming from one enterprise. And why this is happening? Because that farmer has become specialized in that particular enterprise। और उस farmer के पास अगर कोई फार्मर स्पेशलाइज हो गया है शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, सो ऑल द टेक्नोलॉजीज, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द इम्प्लीमेंट्स विद दैट फार्मर, जो फार्मर के पास शुगर केन प्रोडक्शन के लिए ही होंगे, तो वो क्या करेगा, उस पर ही काम करेगा, एंड ही विल what he will do that type of farming, ठीक है? So this is called specialized farming system. Clear? Next we have is integrated farming system. Now what is integrated farming system, students? Again, one of the type of farming system followed in India is specialized farming system, right? Then we have integrated farming system. What is integrated farming system? So students, in integrated farming system, we are mixing all the enterprise, we are mixing all the different enterprise in such a way that it do not have, you know, we are, देखो farming system में हमने enterprise को mix तो किया ही है, but हमारा objective क्या है? When we are, you know, mixing all the enterprise in such a way that हमें profitability को बढ़ाना है, as well as environment consequences को कम करना है, then that will be called as integrated farming system. Integrated farming system क्या है? When we are, you know, when we are mixing all the enterprises, कि हमारा जो profitability है वो increase हो सके, as well as environmental जो hazards हैं उनको कम कर सके, that is called integrated farming system. तो basically integrated farming system का मतलब ये है कि इस तरीके से हमें करना है कि हमें environmental impacts को कम करना है. Clear? So that will be your another type of farming system which is followed in India. So I hope it is clear to you. Now students, apart from this, there are some modern farming techniques which we have to discuss. What is modern farming? Modern farming is basically again where modern techniques and technologies are used. ठीक है? अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे, that farming is done in field, in open area, right? Some of the farming is done in lab, in closed condition also, right? So these are called modern farming systems, where the advanced, recent, usually you know, abhi bhi ye modern farming system kam adopted hai, but yes, they are the most recent and advanced form of farming system that are there, right? Now what are the different type of modern farming system that we have is first hydroponics. What is hydroponics? Hydroponics में basically क्या होता है? In hydroponics we are not using soil here, ठीक है? Instead of soil, for supporting the plant, other type of material like vermiculite, coco peat, perlite, these things are used. You can see here. और हम क्या करते हैं? We are supplying nutrient and water mix to the plant root,
ठीक है, हम प्लांट रूट में एक न्यूट्रिएंट वाटर न्यूट्रिएंट मिक्स को सप्लाई करते हैं एंड दैट nutrient is taken, that water and nutrient is taken by plant and then plant grow. So basically here we are not using soil यहाँ पे use नहीं होती है, that's why it is also known as soil-less culture, ठीक है. So this is your hydroponics जहाँ पे हमने क्या किया, nutrient rich media और nutrient solution को use किया है for growing the crop. Clear? Next we have is aeroponics. What is aeroponics? So students, aeroponics में क्या होता है, here हमने क्या, इन हाइड्रोपोनिक्स हमने पानी को सप्लाई किया प्लांट रूट पे एंड प्लांट रूट ने पानी से न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब किया एंड प्लांट ग्रो, राइट. एरोपोनिक्स में वी आर नॉट डायरेक्टली सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट रूट, रादर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ मिस्ट एनवायरनमेंट कंडीशन. अब ये जो मिस्ट बनती है ये अगेन दैट न्यूट्रिएंट मीडिया की बनती है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की बनती है, ठीक है. और इस मिस्ट से फिर जो मिस्ट एनवायरनमेंट है उससे प्लांट्स वाटर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे एंड प्लांट विल ग्रो, दैट इज कॉल्ड एरोपोनिक्स, ठीक है. डायरेक्टली प्लांट टच नहीं करेगा, सॉरी डायरेक्टली वाटर टच नहीं करेगा आपके प्लांट रूट को, रादर जो वाटर है उसके मिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा और उस मिस्ट से ही प्लांट रूट वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल ग्रो, ठीक है. Then we have is aquaponic system. What is aquaponic system, students? So basically in aquaponics आपके जो फिशेस हैं दे आर ग्रोन एज वेल एज आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो की जाती है, ठीक है. तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली फिशरीज एंड क्रॉप प्रोडक्शन. अब कैसे किया जाता है, देखो फिशेस आर ग्रोन इन अ पॉन्ड, ठीक है. नाउ दिस फिशेस विल एक्सक्रीट सम काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड फिशेस excrete ammonia basically, ठीक है. Now this water which is ammonical rich water will be supplied to the plant root. Plant will absorb the ammonia, plant will absorb the nutrient from that water and plant will grow. And the filtered plant filtered water, ठीक है, जो water filter हो गया है, plant ने ammonia absorb कर लिया, right, and the water that is left is again drained back to this pond, ठीक है. एक recycle system बनाया जाता है, this is called as aquaponic system, ठीक है, जहाँ पे fish cultivation भी होता है and crop production भी होता है, ठीक है. Then we have a tissue culture system. What is tissue culture system, students? This is another type of modern farming system जहाँ पे हम lab में plant को grow कर रहे हैं, ठीक है. तो lab में कैसे plant को grow कर रहे हैं, basically here we are using any part of plant, ठीक है, कोई भी part of plant, it can be leaf, it can be root, it can be seed, it can be any part, ठीक है. And we are placing that part into growing media. ये जो आप white देख रहे हो, this is a growing media. ग्रोइंग मीडिया में वो पार्ट को रख दिया जाता है, कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है एंड दैट पार्ट विच वी हैव प्लेस्ड will grow into new plant. You can see in these test tube new plants are growing. This is called tissue culture. Means हमने एक टिश्यू से पूरा प्लांट कल्चर कर दिया. That is known as tissue culture. Clear? I hope now hydroponics, aeroponics, aquaponics, tissue culture ये clear है. Now next we have few other important terminologies. So vertical farming. What is vertical farming, students? You see farming is done in this vertical stack. ठीक है, जब land कम होती है तो what we do, we utilize the vertical space. So you can see here vertical space is being utilized and these towers are built और यहाँ पे vertically crop को grow किया जाता है, that is your vertical farming, ठीक है. Then we have precision agriculture. So students, precision agriculture क्या है? When we are precisely managing the part of field, ठीक है. Usually होता क्या है कि if there is a problem in this part of field, ठीक है, for say यहाँ पे अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई है तो हम क्या करते हैं, यूजुअल प्रैक्टिस इज टू थ्रो और टू डिस्ट्रीब्यूट और टू ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइजर ऑन एंटायर फील्ड, ठीक है. जरूरत नहीं है, जरूरत इसी पार्ट में है, तो व्हाट इज डन इन प्रिसिजन एग्रीकल्चर, दैट पार्ट इज आइडेंटिफाइड. प्रिसाइजली देखा जाता है कि किस पार्ट में क्या ज़रूरत है, कौन से एरिया में क्या ज़रूरत है, कहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे फर्टिलाइजर की जरूरत है ना, अकॉर्डिंगली दैट पार्ट इज ट्रीटेड, ठीक है. सो दिस इज नोन एज प्रिसिजन एग्रीकल्चर. व्हेन प्रिसाइजली वी आर इंस्पेक्टिंग द साइट विच नीड आवर अटेंशन एंड देन वी आर ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर साइट. इसको साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं,
ठीक है, सो दैट इज प्रिसिजन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वी हैव इज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, अनदर टर्म दैट इज दैट आप सुनोगे तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड कि इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम इंटेंसिफाई कर देते हैं इनपुट्स को. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं वो जो जितने भी इनपुट हैं हम इंटेंसिवली उनको यूज करते हैं. और ऐसा हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन. ठीक है, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ यील्ड पर यूनिट फार्म और पास्चर. ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? बेसिकली हमें एग्रीकल्चर इस तरीके से करना है so that we can meet our demand as well as the demand of our future generation. दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ऐसा नहीं करना है कि हमने अभी सारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया एंड फ्यूचर जनरेशन इज डिप्राइव ऑफ दैट. सो वी हैव टू बेसिकली डू अ सस्टेनेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी आर मीटिंग आवर ओन डिमांड as well as looking after the demand of our future generation. Clear? So that is the meaning of sustainable agriculture. And then we have climate resilient agriculture. So what is climate resilient agriculture? एक और टर्म है जो आपने सुना होगा रिसेंटली, न्यूज़ में काफ़ी है, राइट, काफ़ी इस पर बात भी हो रही है. तो बेसिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है स्टूडेंट्स, कि हम कितने तैयार है चेंजिंग क्लाइमेट, हमारा एग्रीकल्चर कितना तैयार है for the changing climate. We know global warming is happening, climate is changing, right? So and we also know that agriculture is usually dependent on climate. Climate में बहुत सारी चीज़ें depend होती है agriculture की, right? So ability of agriculture system to anticipate and prepare for as well as adapt to or absorb and recover from the impact of changes in climate and extreme weather, that is called climate resilient agriculture. मतलब changing environment, changing climate के साथ हमारा agriculture कितना prepare है, कि अगर हमारा अगर climate change होता है तो agriculture हमें कितना sustain कर सकता है. that is known as climate resilient agriculture. ठीक है, so I hope these concepts are also clear. Now why I have discussed all these things, because ये आपको terms कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी. ठीक है, so you should know what are these things. और अगर इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट इज ऑल्सो अगेन कि आप उसको कर सको, राइट. क्लाइमेट रेजिलेंट से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर से. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज एन इंटरडिपेंडेंट interrelated of an interlocking production system based on few crops, animal and related subsidiary enterprises in such a way maximizes utilization of resources of each system, minimizes negative. Now here the thing is minimizes the negative effect of these enterprises on the environment is known as. So will it be the specialized farming system? No. Organic farming system? No. Subsistence farming system? No. So answer will be integrated farming system. ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कैसे. आंसर विल बी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन रादर देन सॉइल. ठीक है, रादर देन सॉइल मतलब सॉइल नहीं यूज होगा. ठीक है, एंड कैन इंक्लूड एग्रीगेट सबस्ट्रेट फॉर ग्रोइंग मीडिया लाइक सच एज वर्मिकुलाइट, कोकोनट कॉयर एंड पर्लाइट. तो एरोपोनिक्स विल नॉट बी द आंसर, एक्वापोनिक्स विल नॉट बी द आंसर. सो आंसर विल बी हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड है हाइड्रोपोनिक्स कैसे आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स हियर लेट्स सी ऑप्शंस. ऑर्गेनिक कल्टीवेशन विल नॉट बी द आंसर, राइट. नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, आई विल टेल यू. सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होगा. ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है कि नोमैडिक हर्डिंग इज बेसिकली यहाँ पे कुछ ट्राइब्स होती हैं, दे आर कॉल्ड नोमैड्स, राइट. दे कैरी लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर. ठीक है, जहाँ पे उनको पास्चर मिल जाता है दे सेटल देयर फॉर फ्यू टाइम्स एंड देन दे अगेन मूव फॉरवर्ड. सो सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज नोमैडिक फार्मिंग और नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. आंसर विल बी जूम कल्टिवेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्लैश एंड बर्न ये कहाँ पढ़ा था हमने, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में, राइट. So I hope now all these topics, all these things are clear to you and you have enjoyed the lecture. If you have, please let me know. That's all for this lecture. Thank you for watching. Thank you so much.